Lewis dot structure. Please write the topic Lewis dot structure. Okay. So here we will write the first point. Lewis dot structure is composed of Lewis symbols. Lewis symbols. Okay. So, like, what is Lewis symbol? For example, if I talk about Mg, magnesium, then magnesium, it will be written as, see, it will be written as Mg, and there will be two electrons, two valence electron on Mg. So those two valence electrons are shown by dot. You can show them by cross also, okay, or Mg, and you can write two cross like this. So these two cross or these two dots, these are representing the valence shell electron of magnesium. Similarly, if I go to the another element such as sodium, it should be represented as Na, a dot representing one valence electron, or you can write it sodium with a cross. Now, for this, obviously, you need the understanding. Also, you need to remember what are the valence shell electron of different elements. There is no other way. Okay, if you want to write if you want to know how to draw the Lewis dot structure, you must know how to write. You must know the valence shell electron. Now, what is the valence shell electron of sodium, magnesium? For example, if I talk about sulfur, then sulfur, it is in group 16 and it has 6 valence electron. And when I say valence, please understand that I'm talking about valence shell electron. I'm not talking about the valency. So for 6 electron, you can show it like this: 1, 2, 3, 4, 5 here and 6 here, a symmetric position like this. Or you can show it, I'm only showing by dots now. You can show it like this: sulfur 1, 2, 3, 4, and 2 dots here. So these are the two different ways by which you can show sulfur atom. Both of them are correct. It should be just symmetrical. Make sure that it looks good. Now, moving on. B is boron. So boron has 3 valence electrons. So it will be like this. Okay. E is, you can write for aluminium. Aluminium also has 3 valence electrons. So please write for aluminium. I'm giving you some examples to write. E. F, nitrogen, it has 5 valence electron. G, oxygen, it has 6 valence electron. H, chlorine has 7. I, potassium has 1. And J, what you can write for J? J may have sulfur 2 negative. Okay, this one I am showing. So sulfur, it has how many? Sulfur has how many valence electrons? 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 negative means 2 extra electrons are coming. So those 2 electrons will be here, and this will be in brackets as 2 negative. All of you understood this? Yes or no? Please tell me how to write for ions. Yes, sir. All of you guys. I will give you, I don't know how much, 4 minutes will be enough. Take 4 minutes. I think 4 minutes will be enough. You can use periodic table if you want to know the valence electron. How many valence electron are there? Actually, red color se jo likha hua na, whatever is in red is the valence electron. For aluminium, we have 3 valence electron. Nitrogen, we have 5. Oxygen, we have 6, 7, 1. ठीक है, लिखना सीख जाइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप लोग को पता होना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा. The group number, the unit digit of group number represents the valence electron. So if you know the group number of aluminium, you know the valence electron in aluminium. If you know the group number of oxygen, you know the valence electron of oxygen also. Fluorine, similarly, potassium, nitrogen, all of them.
Send me on WhatsApp, no? Okay, send me on WhatsApp. Okay, Amna. Who else has sent? इसका नंबर हम सेव नहीं किया हुआ. Is this Akib? Yes, sir. Now, aluminium, correct. Nitrogen, yeah, fine, correct. Oxygen. Oxygen has how much? 6 electrons, no? Amna. Yes, sir. Chlorine, correct. Potassium का 1 electron है, इसको भी कर लीजिए. Okay. Okay. You understood the mistake in oxygen? Amna? Yes, sir. Okay. Others, please send the answers, guys. Time is over. Sir, Tell me. I don't have your number. Can you put it Sure, in no the problem. box? Yeah. 7530 7530998 Add a plus 91 maybe. Send this number to somebody, okay, like your father, mother, or if you have a group of your own, in which no one is member, only you are a member, or saved messages. Send this number to that, to anyone, any one of the chats, and this number will appear on blue. Click on that, and then you will, it will say chat with plus 917530998007. Chat, I mean, click on that chat with. Because sometimes I have seen in Saudi Arabia, my number does not show on WhatsApp if you save as contact. Okay, so what happened? Richita has not sent anything. Shaista, you have not sent anything. Yes, sir, I sent it. Just saw that. Boron, aluminium सही है, nitrogen सही है, oxygen सही है, chlorine सही है, very good. चलिए, ये ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं लगाते इसमें, छोटा सा सवाल है, इसी है गाइस.
Aluminium, similar to boron, 3 like this. For nitrogen, for oxygen. So you can write it like this also, or you can write it oxygen, 2 electrons like this, 2 pair of electron like this. Okay, both are fine. For chlorine, 2, 4, 6, and 7. Potassium has only 1 electron, so you can just write it anywhere. Like this, and both of them are fine. Is everyone done? Yes or no? Please tell me. All of you wrote this? Yes, sir. Now is the important part, major part, that is the lowest dot structure for molecules, LDS for molecules. This is just symbols, okay? Right, next part. LDS for molecules. Now, LDS for molecule has a few steps that you need to follow. So what are these steps? Please see. Number 1 step is, the first step that you have to follow is to determine the, अच्छा यहाँ पे एक सेकंड पहले कुछ चीजें लिख देते हैं. Whenever we write LDS of a molecule, you have to make, please write here, make each atom happy. Okay, you have to make each atom happy. Now, what is the definition of happiness in for the atoms? Please write, when valence electron of an atom is 8, it is happy. It is happy, except hydrogen, as it needs only 2 electrons. Okay, all the other atoms, it would need at least how many electrons? It will need 8 electrons, but hydrogen will only need 2 electrons to make it happy. Now, what are the steps? First step is to determine the total valence electron. Determine total valence electron. TV is total valence electron. So इसको लिख देखिए पूरा. एक सेकंड. Let me write it. बाद में आप लोग भूल जाइए कहीं. Total valence electron. So TVE, total valence electron. Second step is to draw a skeleton. What is skeleton? We will see that. Third step is to add electron to complete octet. So you can remember this by 2s8, TVS 2s and 8. So 2s8 you can remember, first TVE, then S, then 8. 2s8. First question, which will be regarding determine the total valence electron. Please write. Determine the total valence electron in following. Number 1, CO2. Okay. Number 2, we'll look at NH3. Number 3, we'll look at CH4. Number 4, we will look at NO3 negative, NO2 negative पहले. उसके बाद 5 NO3 negative. 6 CO3 negative. CO3 2 negative होता है. CO3 2 negative.
Okay, now first of all, CO2. Okay, guys, can you please turn your mic on quickly? Can you please turn your mic on quickly, guys? Akib, Abdul Hamid, Khadija, Kashita. Yes, sir. All of you. Yeah. How many valence electron in carbon? 4. 4. Plus how many valence electron in oxygen? 6. 6. 6. So 2 into 6 because we have 2 oxygen. So this will be how much? 12 plus 4 will be equal to 16 electrons. Okay. Correct? So yeah. Yes. Yes, sir. Nitrogen how many valence electron? 5. 5. Plus how many hydrogens we have? 3 hydrogens. Each 3. hydrogen has how many valence 1. electron for hydrogen? 1. 1. 5 plus 3 will be equal to 8 electron. 8. बाकी करके बताएं. NO2 कहाँ बता दे रहे? Where you have negative charge. Nitrogen is how much? Valence electron in nitrogen is 5. 5. Right? Yes, Plus sir. 2 into for oxygen we will have 6. 6. Now plus 1 for the negative charge because this negative charge will be coming from the electron. Negative charge will be coming from the electron. That is why we will have plus 1 which will be equal to 5 plus 6 and here we have 12. 12 plus 6 will be equal to 18. Okay, so please calculate for these three CH4, NO3 and CO3 negative. You guys have 2 minutes. जल्दी कीजिए. पहले इनका कैलकुलेट कर लीजिए which is vacant right now. इसका हमने नहीं किया है. Then you will write for CO2, NO2 negative, NO3 negative and all of these. ठीक है? Sir, please can you explain again? नहीं हम बोल रहे हैं पहले इनका कैलकुलेट कर लीजिए. No, I was asking about the fourth one. Can you explain again? Okay, fine. Nitrogen 5. Yes, sir. 2 into 6 for oxygen. Yes, sir. And this negative charge will be only because of an electron, right? Yes, sir. So plus 1. Okay, sir. Thank you. Okay. Take no more than 2 minutes. CH4 correct. NO2 negative तो ठीक है. NO3 negative is correct. CO3 2 negative. सही है. हाँ आके तो फिर व्हाट्सएप पे भेजिए ना. फिनिश तक क्या लिखते हैं? व्हाट्सएप पे भेज देंगे कि हो जाए तो ठीक है. आके CH4 Yes, sir. correct. NO3 negative 5 plus 1. So yeah, correct. Others, please send now. What happened? Ilham, Khadija, you guys have not sent till now. Acha, Khadija is, oh my god, Khadija for the first time, she's interacting. Khadija, Ilham, jaldi bheje, jaldi time over ho chuka hai. Ilham, you did not get this?
इल्हाम, अब्दुल हमीद, Sir, I just What happened? sent. you just sent. कहाँ भेजा आपने? So WhatsApp. व्हाट्सएप, ओके ओके, जी जी, जस्ट मिला मुझको, जस्ट मिला, ठीक है, ओके। CH4 फाइन, करेक्ट, NO3 नेगेटिव, करेक्ट, CO3 2 नेगेटिव है इल्हाम, बेटे CO3 2 नेगेटिव ना, देखिए Yes, I missed that. जल्दी ठीक कीजिए उसको। अरे ऐसे कैसे चलेगा काम, हाँ इतना टाइम लगा रहे हैं आप लोग। NO3 नेगेटिव रॉन्ग, खदीजा रॉन्ग, चलिए, अरे यार बहुत मुश्किल है फिर तो ऐसे। अब्दुल हमीद, व्हाट हैपेंड, यू हैव नॉट सेंड द आंसर। अब्दुल हमीद, माइक ऑन करें जल्दी, क्विकली, व्हाट हैपेंड? सर कर रहा हूँ। कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बताइए, चलिए कार्बन का बताइए कितना होगा। कार्बन 4 4 प्लस, बोलो 3 आगे, 3 सॉरी 3 3, एक सेकंड, क्या बोला, थोड़ा साफ साफ बोले हैं अब्दुल हमीद, माइक के करीब आ जाए, माइक। 3 बोला आपने, 3, हाँ क्यों 3 होगा जरा बताइएगा। हाँ हम्म, हाँ अब्दुल हमीद, क्यों होगा 3? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ 3 हुआ, है ना, हाँ यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ 3 हुआ, ठीक है, तो थोड़ा समझिए ना, व्हाट इज दिस, क्या बोला ये हमने। TVE क्या है अब्दुल हमीद, व्हाट इज TVE? नहीं पता अब्दुल हमीद, नहीं पता TVE क्या है? हाँ, अरे नहीं पता, जल्दी बताए ना, देखिए जोर नहीं से सर। बोले, एक तो साफ साफ बोले, ठीक है ना, आप मेरे नजदीक नहीं बैठे कि हम आपको एक झाप मार, ठीक है, तो डरने की कोई बात आपको है नहीं। आपको अगर आ रहा है तो हाँ बोलिए, नहीं आ रहा है तो ना बोलिए आप, नहीं ठीक सर। है, बोलिए। TVE क्या है? आ, नहीं पता, नहीं पता बोलो ना नहीं यार, नहीं जल्दी बोलो, नहीं पता, ठीक है। आप यानी कि ध्यान नहीं दे रहे क्लास में, कुछ और कर रहे हैं आप साथ साथ, बताइए। नहीं नहीं फोन ऑन इधर है ना, अलग है, नोटिफिकेशन नहीं नोटिफिकेशन नहीं देख रहे ना, पक्का? नहीं तो क्यों नहीं पता आपको TVE के बारे में, जब हमने यहाँ पे लिखाया जा चुका है, ये आपने नहीं लिखा, नहीं मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखा था। वेरी गुड। तो हमने ये क्यों लिखा भाई, ये तो शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब लिखा है हमने, कहाँ याद रहा आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा तो, क्या है बताइए ये, व्हाट इज TVE? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ NO3 का आप सही है, NO3 का आप सही है खुदेजा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताइए, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन वैलेंस 3। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है पहले बताइए फिर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या वैलेंस होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब जो बच जाता है। बच जाता है, कहाँ से बच जाता हम्म, है? मतलब ऐसे थोड़ा सा आपने चावल वाल में नमक वगैरह डाल दिया, नमक थोड़ा सा बच गया, वो बच गया, क्या बच गया, मतलब बच जाने का मतलब बहुत दिक्कत होने वाली है तो, ठीक है। आप लेट आए थे, कितने लेक्चर्स आपने देखे हैं अभी तक जरा बताइएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का आपने एक भी लेक्चर देखा है, क्वांटम नंबर्स का? हाँ सर। अरे जोर से बोलो यार, ऐसे हाँ करके सर कुछ हाँ नहीं सर। होता। देखा, कितना देखा है? अभी तक तो पूरे देखा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सारा लेक्चर देख लिया आप? एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं। कुछ नहीं देखा उसका आप? नहीं
तो देखना पड़ेगा ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको अगर नहीं पता है तो आपको मेहनत करने की जरूरत, ठीक है। जी टाइम निकालिए, कब देखिएगा फिर एटॉमिक्स, क्या सोचा आपने, नहीं पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर? बताइए। कुछ तो सोचा, नहीं पढ़ना, या तो सोचा नहीं पढ़ना, चलो हटाओ, नहीं पढ़ना, ठीक है ना, वो भी होता है, कोई बात नहीं पढ़ना, चलो मान लिया नहीं पढ़ना है, तो वो बताइए। अगर आपने सोचा है पढ़ना है तो कुछ तो ये सोचा होगा ना कब पढ़ना है। ऐसे हाँ ख्याली पुलाव पे तो आप बिलीव नहीं रखते ना कि सोच लिया तो हो ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आपने कोई चीज सोचा है करनी की, तो फिर क्या करना पड़ेगा ना, प्लान करना पड़ेगा आपको। उसमें कोई आपको ऐसे नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा, हाय अब्दुल हमीद प्लीज वॉच द लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे आपको क्लास के मैसेजेस आते हैं, है ना। वो तो होगा नहीं कि कोई आपको फोर्स कर रहा है, कोई आपको याद दिला रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका और आप, बस सिर्फ आपका अपने साथ पैक्ट है कि हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। सही बात है ना। ठीक है। तो क्या, या तो आप प्लान कीजिए कि मेरे पास दिन में इतना घंटा टाइम होता है, इतना घंटा हम स्कूल जाते हैं, इतना घंटा हम सोते हैं, इतना घंटा मेरे खाने पीने नमाज और बाकी चीजों में जाता है, और मेरे पास बचता है वक्त सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, जिसमें कभी हम गेम खेल लेते हैं, या फिर मेरे पास बचता है 2 घंटा 3 घंटा, जो भी कुछ होता है उसमें कभी हम गेम खेल लेते हैं, या फिर हम इतने घंटे मोबाइल चलाते हैं। आपको वहां से कुछ ना कुछ आवर्स को हटा निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, हॉलीडे तो आपने गुजार दिया, अगर आपके हॉलीडेज बचे हुए हैं तब तो आपको स्कूल जाने का टाइम जो है वो बचा हुआ होगा, उसमें आप कंप्लीट कीजिए। अगर आपका स्कूल खुल चुका है तो आप एक दिन एब्सेंट कीजिए, उस दिन अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि कम से कम हम 3 लेक्चर्स देखेंगे, कम से कम जितना स्कूल का टाइमिंग होता है उसमें से आप 1 घंटा हटा दीजिए ताकि आपको ब्रेक्स मिल पाए। और फिर उस टाइम पे हम क्या देखेंगे, पुराने लेक्चर्स देखेंगे। वो प्लान करना पड़ेगा, अपने आप से नहीं होगा। अपने आप से सिर्फ जानते हैं क्या होता है, अपने आप से सिर्फ दिन गुजरते हैं, अपने आप से और कुछ नहीं होता है। ओके, सो बैठिए, प्लान बनाइए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। हाँ, और फिर एक एडवाइस ये रहेगी कि एक्सट्रीम लेवल का प्लान मत बना दीजिएगा कि 10:12 पे हम यहाँ से निकलेंगे और 2:13 में हम घर पहुंचते हैं, और 2:07 में हम ये कर लेंगे ताकि हम तैयार हो जाएंगे। वैसे नहीं कीजिए, बिल्कुल आराम से लमसम अमाउंट में आप कम से कम 1 घंटा डेली निकालें तो बहुत ही ज्यादा है रिवीजन के लिए पुराने चैप्टर्स का। अगर आप डेली 1 घंटा निकाल रहे हैं बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। 1 घंटा ओके। निकालिए, लेकिन आप कंसिस्टेंटली कीजिए, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ मेस, ठीक है। अभी हम हाइड्रोजन का बता दे रहे हैं आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वही होगा वैलेंस शेल। ये यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, दिस इज हाँ द हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये 3 कहाँ से आया, बिकॉज वी आर हैविंग हाँ, 3 वो उधर है। हाँ हाइड्रोजन्स। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 4 + 4 इट इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। ओके। NO3 negative. So nitrogen has 5 plus how many oxygen? 3 multiplied by the valence electron in oxygen 6 plus 1 because we have a negative charge. Now here we have how much? 6, 18, 24 electrons. CO3 2 negative. For carbon we have 4 valence electron plus 3 multiplied by 6 because here we have 3 oxygen and each oxygen has 6 valence electron. Plus I will add 2 electron because here we have 2 negative charge. 4 plus 2 is 6 and 6 3 is 18, that means 24 electron. चलिए, right, next skeleton. Right, next skeleton. Now for the first thing, each molecule has central atom and surrounding atom. Each molecule has central atom and surrounding atom. Okay, first point, hydrogen and fluorine can never be central atom. Ca is central atom, as they can form only single bond. B part. Now we have taken care of hydrogen and fluorine. What about other elements? The less electronegative element
the less electronegative element will be central atom. For those who don't remember the electronegativity series, please write this down. Fluorine, then oxygen, then nitrogen. Phone, call, bro, Br, ishq, I, S, and C, iodine, sulfur, and carbon. Ishq, pyar hai. So this is the electronegativity series. This is the electronegativity series. Okay, so for example, if I ask you to draw the structure of following, so you draw the skeleton of following, draw the skeleton of following. And the first element that I give you is carbon dioxide. So for carbon dioxide, then what you are going to draw? See, carbon will be central atom. So carbon is in center and surrounding atoms are attached to central atom. So this is the skeleton of CO2. B, we have NH3. Achha, why is carbon the central atom? Because carbon has less electronegativity than oxygen. So we have seen the less electronegative element will be central atom in NH3. Now see, there are a certain criteria for choosing central atom. But in your case, only this one, these 2 points are enough for the choice of central atom. That is why I have not written the other points. Okay. Hydrogen and fluorine can never be central atom. And the less electronegative element will be central atom. Nitrogen and hydrogen is, so obviously hydrogen can never be a central atom. So nitrogen will be the central atom and each surrounding atom is attached with the central atom. So hydrogen will be attached with nitrogen like this. C part, for example, if you have NO2 negative. Now I have not said anything about the negative charge. So while making the skeleton, you will not consider the negative charge. You will see NO2, you will just draw NO like this. Just make sure that the skeleton that you are making is kind of a bit symmetrical. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा दिखना भी चाहिए. It should be symmetrical. Okay. D, for example, if you have NO3 negative, then here also you are not going to look at the charge. You will just draw nitrogen with 3 oxygen like this. Similarly, if I draw for CO3 2 negative, you will not look at the charge and you will draw C oxygen, oxygen, and oxygen. If you want to draw for CH4, then you will have carbon bonded to 4 hydrogen like this. So all of these are skeletons. All of these are skeletons. Some of these are, all of these are skeletons only. Okay. Now, in a skeleton, what is happening? In a skeleton, each surrounding atom is attached to central atom with single bond. Okay, with single bond. Another point, each bond contains 2 electrons. Each bond contains 2 electrons. Shall you write this down? Sir, what's SA? Surrounding atom. Okay, sir.
Finish, sir. My bad, guys. I got disconnected somehow. Okay. Just confirm. Am I audible properly? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir, done. Done now. Okay. Okay. So now what do we have? Each bond contains 2 electrons. Yeah. Now, write the question. Draw Lewis dot structure for following. Okay. See, for the first one, I will write that is CO2, carbon dioxide. Okay. Please don't write anything अभी, है ना? आप लोग जितना हो सके mic on करके रखिए and try to answer me whenever I am asking something and try to understand things. Okay. Don't write anything. Okay. Please don't write anything. चलिए, please turn your mic on. Those जिसको भी पढ़ना है, जिसको भी सीखना है, please mic on कर ले. ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है. ठीक है, I will give you 10 seconds to turn your mic on. Keep your mic on also. Okay. Don't worry. Keep your mic on आराम से. First of all, the first step is what is to calculate or to determine. जरा देख के बताइए नोट्स में अपने. पहला क्या करते हैं सबसे पहले? What do we determine? The total valence electron. Total valence electron. So total valence electron of carbon dioxide you must have calculated. Please answer करने की कोशिश कीजिए. माइक ऑन रखने से कोई फायदा नहीं बाकी लोगों को. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? आपके नोट्स में होगा, कैलकुलेट किया हुआ है. टेल मी गाइस. 16 electrons. हाउ मेनी? जोर से सबके बोले. 16. 16 electrons. Yeah. Thank you very much. I am getting the answer 16 electrons. After total valence electron, what do we do next? Draw skeleton. Draw skeleton. So skeleton भी हमने बना लिया है. Oxygen bonded with Central carbon one. and then one centerless carbon. Okay. Now, next thing is very important. Next thing is very important. Now here we have 2 bonds. Correct, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, Yes, sir. Yes. Here we have 2 bonds. Okay. Now that means we had 16 electrons initially. 2 bonds mean how many electrons are being used? How many electrons are used already in 2 bonds? 2. One bond has how many electrons? Each bond is 2 made up electrons. of 2 electrons. So 2 bond will be made up of how many electrons? 4. 4. 4 electrons, right? So I will subtract 4 from 16. How many is remaining? 12. 12. 12. So this is something that we have to do. Okay. The remaining electron is the next step. Okay. First of all, you will see how much is remaining. Now, see. अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, please, है ना? All of you guys, please listen very carefully. This oxygen atom, it is having 1 bond. That means it is having how many valence? How many electron now? It is having 2 electrons, right? It is having 2 electrons, correct? Yes, sir. Now, similarly, this oxygen atom also it is having 2 electrons, correct? Now, if I talk Yes, about sir. the carbon atom has 4 electrons, correct, guys? Carbon atom has 4 electrons, Yes, Yes, sir. sir. right? Okay. So, is oxygen happy? Tell me, is oxygen happy? Yes, sir. What is the criteria sir. for happy? What is the criteria for happy? What is the criteria for happy?
octet state. Sir, it should be octet, 8 electrons. 8 electrons. अभी इसके पास कितने हैं लेकिन? How many electrons does oxygen have? 6. Right now it has only two. See in the Sir, it skeleton. will be it's only having two, 8, huh? right? No, it will not be having 8. How it will be having 8? It is having only Sir, 2. it is sharing with carbon, right? It is sharing with carbon. Very good. So So it total will be 8. So it will be happy. how total will be 8? How total will be 8? Where are the other 6 electrons? कहाँ So है it is बाकी के already 6? have 6, right? अरे नहीं, वो तो नहीं है अभी. ठीक है, कहाँ है अभी? So we won't ये count ऊपर that डालना है. 6. Though that is not present now. Can you see that? No, sir, not now. No, it's not present right now. Okay, now please see. Here we have 12 electrons remaining. है ना? अभी आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं हैप्पी बनाने के लिए. If you want to make oxygen happy, we have 12 electrons. And how many electrons does oxygen need? It only needs 6. So out of these 12, I will add 6 to the oxygen like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All of you understood? Now oxygen is happy. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Up remaining is 6. We will add those 6 electrons to this oxygen. Now this oxygen is also happy. Correct? Yes, sir. Yes, sir. What about the carbon atom? Is carbon happy? Has 4 electrons, so it is happy. How it is happy? It has only 4 now. To be happy, it needs 8, right? Hi, Anna. Guys, tell me. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. It has how many? It has how many right now? Carbon has 4. 4. 4. 4. So, but it needs 8 electrons. So what it will do, we see here very clearly, it will ask oxygen atom, oxygen, please give me these 2 electrons. Please give me a pair of electron. And this oxygen also, please give me a pair of electron. So what will eventually happen is that oxygen will say, okay, carbon, I will make 2 bonds with you. That means it is sharing now. It was sharing 2 electrons. Now it is sharing 4 electrons with carbon atom. And this oxygen is also sharing 4 electrons with carbon atom. Now, since oxygen has given both the electrons to the carbon atom like this, so oxygen will have left with only 4 non-bonding electrons. And this oxygen is also having 4 non-bonding electrons. Okay. Now, the lowest dot structure is generally shown like this. We have carbon atom. Now, this carbon, it is making 2 bonds, right? So one bond will be having 2 electrons. The other one will be having 2 electrons. So 2 electrons and 2 electrons. So these are the 4 bonds of carbon atom. And then you will have the oxygen. ना ये बनाना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए. ठीक है, इस वजह से हम बॉन्ड बना देते हैं. इसको हम ऐसे बनाते हैं. कार्बन. Don't write anything, guys. Okay, don't write anything. Carbon, double bond oxygen. Double bond oxygen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ पे ये बॉन्ड हमने हटाया और यहाँ हमने डाल दिया इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से. नहीं ऐसे नहीं डालेगा. ओ माय गॉड, ऐसे अच्छा रहेगा. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. हाँ ऐसा तो ठीक रहेगा. सो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन. दिस ऑक्सीजन आल्सो हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स. And this oxygen also has 8 electrons. Can you see that? Yes or no? Please tell me. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, दूसरी चीज ये भी आपको बता देते हैं. देखिए जरा. Wherever you have the bonds, na, wherever you have the bonds, see here. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these are bonding electrons. The blue ones here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are non-bonding electrons. Okay. Yes, sir. Non-bonding in blue, non-bonding electrons. It is equal to how much? 8 electrons. Okay. Similarly, we have bonding electrons, which is also 8 electrons, right? We have 8 electrons. Acha, we also talk in terms of pairs. Okay, we also talk in terms of pairs. Please see, don't write anything. Please see. Non-bonding electrons are 8 electrons. Non-bonding are lonely. That is why they are known as lone pair. Lone pair.
हाउ मेनी लोन पेयर डू वी हैव? सी आपके पास 8 है, तो पेयर कितने हो गए? 4. Yes, You have sir. 4 lone pairs. Similarly, you will have bonded pair. You will have what? Bonded pair. Bonded pair. So how many pairs are bonded? Again 4. Four. Good guys, listen to please tell me. Yes, sir. Yes, सही है, sir. कोई दिक्कत किसी को? No problem, right? No, sir. No, sir. चलिए अब आराम से लिख लीजिए. देखिए ये स्टेप बिल्कुल ऐसे रफ में नहीं करना है आपको. This step that I'm talking about, this step should not be done in rough. You will be doing in the fair copy as I have done. बिल्कुल आराम से ऐसे remaining electron लिख के बिल्कुल, ठीक है ना? See, don't trust your brain. Trust what your brain is writing in the notebook. आपके दिमाग में है क्या, उसके ऊपर किसी को नहीं जानना क्या है आपके दिमाग में. आपकी जबान से जो चीज निकलती है या फिर आप पेपर में जो चीज लिखते हैं वही काम आने वाली है. ठीक है? तो नहीं पता कि आपके सोच विचार जैसे भी हो, मुंह पे बोलते ही गाली निकल रही है अगर आपके मुंह से, तो आपको सब कोई वही बदमाशी समझेगा, चाहे आपका दिमाग कितने भी अच्छे ख्यालात लेके आता हो. ठीक है? प्लीज ट्राई टू राइट एवरीथिंग डाउन. ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में सारी चीजें, आप कोई चीज मत छोड़िएगा. ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग प्लीज ट्राई टू राइट इट डाउन. इज इट क्लियर? यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए ठीक है. प्लीज राइट दिस एंड आफ्टर दैट यू विल ड्रॉ फॉर. इसका दे दें आपको ड्रॉ करने के लिए, बताइए जरा. थोड़ा हमको ना डर लगने लगता है आप लोगों को कोई चीज देने के लिए. किसका निकलवा लिया है हमने. चलिए आप लोग NO2 नेगेटिव में गलती नहीं कीजिएगा ना. आपके पास तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो होपफुली आप गलती नहीं कीजिएगा. NO2 नेगेटिव ड्रॉ फॉर NO2 नेगेटिव. 5 मिनट काफी रहेगा? ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज टेल मी. Yes, sir. 5 मिनट्स. Yes, sir. ये लिख लीजिए, 5 मिनट पे बना भी दीजिएगा. ठीक है? चलिए 5 मिनट्स. सब लोगों ने लिख तो लिया होगा ना, हम इतना मना करते हैं लेकिन लिख लेते हैं बच्चे को. So we had the same Okay. thing also, right? Sorry, what in huh? You're saying something? Yes, sir. We had the same Lewis dot structure in 10th also, right? 10th में था. हाँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ना. Yes, sir. वो डिलीट नहीं किया गया था पोर्शन. हाँ आपने पढ़ा था. No, sir. सबने पढ़ा है. So it was not deleted. अच्छा. ओके ओके. तो वहां पे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट मतलब कैसे बनाते थे वहां पे आप लोग 10th में कार्बन? Sir, वो नहीं था. We didn't have the valence electron concept. अच्छा, तो फिर वो मतलब It आप was- अपने अंदाजे से ना. Yes, Octet it was just a complete brief structure. summary of. It's a brief summary of Lewis dot structure. अच्छा, ऐसे वर्कआउट नहीं किया हुआ होगा. जिनको याद है कैसे करना वो बस बना लिया उन लोगों, है ना? स्ट्रक्चर वगैरह याद है तो. हाँ जैसे sir. मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर आ जाता, कार्बन डाइऑक्साइड में तो फिर मतलब खैर चलिए देख लेते हैं. आप लोग बनाइए सॉरी, है ना? डिस्टर्ब नहीं करें, आप लोग बनाइए आराम से. ये देख लेते हैं आप लोग. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड NCERT PDF. मेरी बहन है अभी 10th में, हमने तो उसको पीरियोडिक टेबल वैसे याद करा दिया जैसे आप लोगों को याद कराया ना. लेके खाना, लेके बारात खाना, मजे से आया, वो सारी चीजें ना याद करा दिए. तो उनको उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर याद हो गए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये सारी चीजें उसका कंसेप्ट क्लियर है. इवन ये चीज तो 9th में ही होनी चाहिए थी. तो पीरियोडिक टेबल याद करा दो, बच्चा कितना खुश हो जाएगा यार. केमिस्ट्री उसको अच्छी लगने लगेगी. किसी बच्चे को, आप सोच सकते हैं इस तरह की चीजें, किसी बच्चे को पीरियोडिक टेबल याद है और उसको केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती है, ऐसा हो सकता है? बताइए हाँ या ना. ऐसा हो Maybe. सकता है कि पीरियोडिक में भी बहुत रेयर चांस है ना. प्रोबेबिलिटी समझ लीजिए जरा. एक बच्चे को पीरियोडिक टेबल नहीं याद है और वो केमिस्ट्री को कितना हेट करता है, और एक बच्चे को पीरियोडिक टेबल पूरा याद है. वो थोड़ा कम तो हेट करेगा, उसको थोड़ा तो आएगा समझ चीजों का. तो हमने इस वजह से पीरियोडिक टेबल याद करा दिया, कम से कम कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई मेरे को पीरियोडिक टेबल आता है. दूसरा ना, कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर भी आ जाएगा, मतलब बता पीरियोडिक टेबल याद है केमिस्ट्री खराब है, ऐसा थोड़ी ना हो. फिर वो मेहनत भी करेगा. खैर आप लोग कीजिए, अपनी बातों को बंद कर दें. इट वुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग. अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ी है इससे पहले मतलब.
ओके, यू हैव दिस H2 में दो दो आ गया है। CO2 का तो आपके पास सवाल दिया हुआ है। CO2 का तो CO2 बना सकते हैं उससे ना, कार्बन की जरूरत कम है, बहुत कम है आपके इसमें यूज काट सकते। तो ये CO2 हाइड्रोजन N2 बस ये डायटोमिक्स नहीं है। हाँ चलिए ठीक है। यस ऋषिता करेक्ट है, फाइन। अच्छा ये आपको ऐसे याद है ना, जो सर्कल वाला उसी तरह से दिया हुआ है आपके इसमें 10th क्लास की नोटबुक में, ठीक है। हाँ सर। बॉन्ड, अब बाकी चीजें आप कर लीजिए। ये जो नॉन मतलब बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बॉन्डेड पेयर सारी चीजें वंस ऑर्डर वंस। वैसे टाइम ओवर हो चुका है गाइस, चलिए हम आपको 1 मिनट और दे रहे हैं जल्दी। उसके बाद जो जिसने भी जितना किया है वो उतना भेज देगा अपना, ठीक है ना। बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे मेरा, जितना किया है आपने उतना भेज दीजिएगा फिर, ठीक है। एक कंफ्यूजन हो रही है सर। अच्छा बताइए क्या कंफ्यूजन हो रही है। जोर से बोलिए इलम इरम इल्हाम, जोर से बोलिए। हाँ नहीं वो I'm just stuck after the like डबल बॉन्ड करने के बाद फिर जैसे CO2 में होता है सेम 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे राइट, आई मीन 8। आप फोटो भेजिए फिर, पहले हमको दिखते ना रहा है आप क्या कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। आमना, ठीक है आमना, आई डोंट नो व्हाई यू हैव मेड 18 - 5, वो हमको समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। ठीक है, स्केलेटन आपने नहीं बनाया है और ऐसा लग रहा है कि आपने कॉपी कर लिया यार कहीं से। आई होप आपने कॉपी नहीं याद करके, या फिर मतलब ऐसे रटी हुई चीज तो नहीं लिख रहे हैं ना आप, ठीक है। तो वो हमको थोड़ा समझ नहीं आया, आपने 13 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा, फिर आपने किस तरह से किया। स्केलेटन भी आपने नहीं बनाया, सीधा आपने स्ट्रक्चर बना दिया है। तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपने कहीं से मतलब बस कॉपी कर लिया है, ठीक है। वो ना हो, ठीक है, आई होप वो चीज ना हो, बट हमको समझ नहीं आ रहा आपने क्या किया है। ऑल्सो जो प्रोसेस है वो शायद कुछ थोड़ा डिफरेंट आपने बना दिया।
So I sent till where I did. You have sent me. हाँ, ये आपने स्केलेटन बनाया अभी, है ना? चलिए ठीक है, यहाँ तक तो Yes. ठीक है। आप एक बात बताइए, आपके पास रिमेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वे रिमेनिंग? इल्हाम So 14. 14। क्या 14 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए आपने? देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले आपने अभी तक? So 12. दोनों ऑक्सीजन 12 डाले, तो अब दो किसके पास जाएंगे? देखिए जब सराउंडिंग एटम्स विद द सराउंडिंग एटम्स आर हैप्पी, अब किसकी बारी आएगी? सेंट्रल एटम की, सही है ना? Night. हाँ, नाइट्रोजन पे आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, फिर 2 बचे हुए ना, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल जाएंगे? नाइट्रोजन पे डालिए, ठीक है? ठीक है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने अब, है ना? आपने सारे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डाल दिए इल्हाम, हाँ। है ना? सब खत्म। अब ऑक्सीजन से पूछिए, ऑक्सीजन हैप्पी है? इज ऑक्सीजन हैप्पी? No. हाँ जी, नहीं, क्यों नहीं? कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास? अच्छा 6 है. It's happy. 6 है? 6 नहीं है, 8 है ना? 6 और फिर 2 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है, राइट? हाँ हाँ हाँ. तो कितने हो गए? दोनों ऑक्सीजन के पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 8. 8 हो गए। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 2. सब जोड़ के बॉन्डिंग, अरे यार बॉन्डिंग भी तो जोड़ो, बॉन्डिंग भी तो है। तो 6. 6 तो हैप्पी है या नहीं है? 6 इलेक्ट्रॉन में हैप्पी होगा या नहीं हैप्पी होगा, ये बताओ ना। तो हैप्पी एक ही तो कंडीशन है, हैप्पी है। क्यों हैप्पी है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना हैप्पी होगा। कैसे हैप्पी हो जाएगा बताओ? क्यों ऐसे ऐसे जवाब क्यों दे रहे हो आप इल्हाम? जब हमने एक चीज लिखा दी है आपको, ये चीज तो लिखा ही भी है ना, ऐसा नहीं कि आपको याद कराने के लिए, मतलब हमने बस बोल दिया है कहीं पे। ये हमने लिखा है भाई यहाँ पे, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज 8 इट इज हैप्पी एक्सेप्ट हाइड्रोजन एज इट नीड्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी को कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन नो। हाँ. तो फिर आप ये जवाब कहाँ से आ रहा है कि हाँ सर हैप्पी हो जाएगा 6 में? ऐसे जवाब तो कम से कम ना देना, ठीक है? तो फिर नाइट्रोजन क्या बोलेगा? नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैप्पी होने के लिए? नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैप्पी होने के लिए? 8. 8 चाहिए। अभी उसके पास कितने हैं? 6. तो अब कितने चाहिए? 6 तो है ना उसके पास, और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. 2 किससे मांगेगा? ऑक्सीजन से. समझ में आया? तो वो हाँ. किसी एक ऑक्सीजन से मांग लेगा, समझ में आई? हाँ. बाकी लोग देखिए, अगर नहीं कर पा रहे ना तो बहुत खराब बात है, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, मतलब ट्राई नहीं कर रहे हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम से कम लिखा हुआ हमको मिलना चाहिए था, और स्केलेटन मिलना चाहिए था, वो भी नहीं आया बहुत सारे बच्चों का, है ना? तो ये तो बहुत खराब बात है। फिर इतना कर सकते थे आप, उसके बाद लाइन बना के यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 18, स्केलेटन में से आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो -4 बच के हो गए 14। Once you have 14 electrons, these remaining electrons will go to oxygen atom like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have still remaining electrons, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have added 12 electrons, remaining is 2, so those 2 electrons will go to nitrogen atom like this. I will ask this oxygen happy, he will say yeah I am happy. Then I will ask this oxygen atom, is it happy? They will say yeah I am happy. Then I will ask this nitrogen atom, are you happy? Nitrogen will say no, I have only 6 electrons, I have 2 bonding electrons, 4 electrons, and we have 2 non-bonding electrons, that means only 6 electrons. So we'll say okay, no problem. We will ask one of the oxygen to give the electrons to nitrogen and share it. So oxygen and nitrogen will now have 2 bonds, and this oxygen will have only 1 bond. The remaining non-bonded electrons will be 1, 2, 3, 4. Here you will have 1, 2, 3, 4, and 5, 6. After that, we will write the non-bonding electrons. It is equal to non-bonding electrons. It is equal to how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 electrons are non-bonding. If I talk about the bonding electrons, then the bonding electrons is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrons are bonding electrons. If I talk about the pairs, then the lone pair is equal to 10, so 5 lone pair electrons are there. And if I talk about the bonded pairs, we will be having only 3 bonded pairs. Is it clear? Yes or no? Please tell me. कैसी लगी हमारी तकरीर? Yes, sir. यस सर, थक गए? जुमे से पहले जुमा खुतबा सुन लिया आप लोगों ने, है ना?
आके कुछ तो गलत था, समझ में आ गया क्या गलत था? Yes, sir. Yes, सर understood. ठीक कर लें, ठीक है। हैप्पी पूछना है ना Okay, sir. आपने, ठीक है। अब्दुल हमीद सर आपका क्या हुआ? हाँ जी बताएं। सर वो लेफ्ट वाला जो ऑक्सीजन है उसमें डबल बॉन्ड और दूसरे वाले में एक बॉन्ड क्यों है, सिंगल बॉन्ड? देखो ऐसा नहीं है, वैसे वैसे नहीं, यहाँ पर सीधा तो डायरेक्टली जंप करके नहीं आए ना हम क्या यहाँ पे हाँ, सीधा आपको स्ट्रक्चर दे दिया? बताइए ऐसा हुआ क्या? नहीं 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 ना, ऐसा नहीं। क्या मकसद है बताइए, हर एक एटम क्या होना चाहिए, वो मकसद आप क्लियर रखिए। ओके रटने की अगर कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश कीजिएगा तो रटते रहिए, फिर सारा का सारा स्ट्रक्चर अलग है लेकिन सब में प्रोसीजर सेम, ठीक है। तो मेन मकसद क्या है बताइए अब्दुल हमीद? ऑक्टेट सारे फॉर्म में। एटम क्या होने चाहिए? सारे एटम हैप्पी होने चाहिए। ऑक्टेट मत बोलिए, हाँ ऑक्टेट बोलिएगा ना फिर आप हाइड्रोजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन डालिएगा। हाइड्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन में ही खुश हो जाता वो। समझ में आ रही? यस सर। और समझ में आ रही है अब्दुल हमीद, है ना? ठीक है, तो हैप्पी होना चाहिए, ठीक है। हमने स्केलेटन जब बनाया, ध्यान से सुनिएगा, स्केलेटन जब बनाया तो इस ऑक्सीजन से पूछा, ऑक्सीजन भाई तो खुश है? तो क्या बोला ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन क्या बोला? ये वाला ऑक्सीजन नहीं क्या बोलेगा बताइए? नहीं 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 खुश है। क्यों? क्यों नहीं खुश है? क्योंकि अच्छा कितने हैप्पी नहीं है। इलेक्ट्रॉन? अरे हैप्पी क्यों नहीं भाई, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो हैप्पी नहीं है? 6। 6। और ये वाला किसका बॉन्ड भी तो बना रहा है यार, बॉन्ड क्यों भूल जाते हो तुम? हाँ सॉरी 8। तो कितने 8 हैप्पी है नहीं है? नहीं, अभी है हाँ अभी है। अभी है, अभी है, पहले नहीं था क्या? अभी पहले भी था भाई, आप देख नहीं पा रहे थे बस। दूसरा वाला ऑक्सीजन हैप्पी है? हाँ हैप्पी है, सही है। नाइट्रोजन से भी पूछ लो यार, नाइट्रोजन हैप्पी है? हम्म, अरे जोर से बोलो, वो ऐसे धीमे धीमे हाँ नहीं, हाँ जोर से बोलो। हैप्पी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास? गिन के बता भाई। नो वेट हाँ 6। तो मेहनत लगती है, ऐसे तुक्के नहीं मारना है, समझे? हाँ सब में हाँ नहीं, अरे गिनो इलेक्ट्रॉन, कंडीशन बता दिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है अब्दुल हमीद? यस सर। यू हैव टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम्स। वर्क समझ में आता है, काम करना पड़ेगा, ऐसे स्ट्राइक नहीं होती रहेंगी चीज। आपको गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर नाइट्रोजन। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अच्छा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है अब्दुल हमीद? नाइट्रोजन के पास क्या काउंट किया आपने, बोलो? नाइट्रोजन के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स है? इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना? अच्छा, हाँ तो कितने चाहिए और इसको हैप्पी होने के लिए? 2 और 2 और चाहिए, तो किससे लेगा वो? ऑक्सीजन से। समझ में आ गया कि इस मतलब किसी एक हाँ ऑक्सीजन से लेगा ना, ओके। दोनों से तो नहीं ले सकता, हाँ हाँ ठीक ओके है। समझ आ गया। समझ में आया? तो भाई देख, हाँ आराम से समझिए आप चीजों को, ठीक है। यू हैव टू, ओके आपको काउंट करना पड़ेगा। देखिए केमिस्ट्री में बता रहे काउंट बहुत जगह करना पड़ेगा, ठीक है। कार्बन पे आइए, कार्बन में इतना काउंट करना पड़ेगा चीजों को, और वो आपको ना ट्रेन करना पड़ेगा आइस को, ठीक है। मैथ्स है आपका कि नहीं है बताइए? मैथ्स है आपका कि नहीं है अब्दुल हमीद? हाँ मैथ्स है Yes, मैथ्स sir. है। मैथ्स है आपका अब्दुल हमीद, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है कुछ 10th क्लास का? हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर इज बी बी स्क्वायर स्क्वायर -4AC माइनस 4ac। वेरी गुड। अच्छा अब बताइए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? बाकी किसी को आ रहा है तो चैट में जवाब दे सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर? एक मिनट सर। इल्हाम ओके, बाकी लोग बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? अरे भाई डी, रूट वूट नहीं पूछ रहे हैं किसी का, ठीक है ना, ध्यान रखिए, रूट वूट वगैरह नहीं पूछ रहे हैं हम। हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर। +-2 लिख दिया आखिर में, b पूछ रहे हैं, कहाँ चले गए बच्चे तो, माय गॉड।
यानी आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक नहीं है, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। ऋषिता, हाँ, अरे ओ माय गॉड, का भाई साहब, ओ Yes, sir. That's the value of x. D कैसे? आगे सारे सब भूल गए ना, प्रैक्टिस ही नहीं किया आप लोगों ने सवाल की। कितना आया था ऐसा सवाल, तो हमको लगता है 2023 में ही आया था शायद। अब्दुल हमीद हमको रूट्स ही बता दे रहे हैं कि ये रूट क्या होगा। अरे भाई, बी पूछा हमने, बी ax² plus bx plus c is equal to 0 is the general form of the quadratic equation. Coefficient of x² is known as a, coefficient of x is the b, constant is the c. भाई यहाँ पे b जो है ना 0 है, 0, ये पता चल रहा है आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। a trained mind, person who is trained on quadratic equation, trained का मतलब समझ रहे हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, मसल बनाते हैं, ठीक है, तो उसी तरह मसल की तरह आपको एक्सरसाइज करना रहता है। इसी वजह से मैथ में एक्सरसाइज, wherever you have numericals, wherever you have question, that is exercise, मतलब वो बार बार करने वाली चीज है, ठीक है। आप लोगों ने नहीं किया प्रैक्टिस। वो वाला सवाल हुआ था आप लोगों से, टैप वाटर वाला एक सवाल है ना, Yes, sir. एनसीईआरटी में एक सवाल है कि टू टैप्स नहीं सर, वो बहुत टैप्स बेकार सवाल था। वो बहुत बेकार सवाल था। पढ़ा दें अभी हम वो सवाल, बताइए। चलिए हाँ यार, सर। इसको लिखिए, आप इसको लिखिए, अभी पढ़ा दें। चलिए ठीक है, इसको लिखिए, फिर टाइम बचेगा पढ़ा देंगे, लिखिए जल्दी। छाप लिया आप लोगों ने, सबने छाप लिया? Yes, sir. यस सर, यस। चलिए। जल्दी से हम लोग CO3 2 नेगेटिव का देख लेते हैं, उसके बाद चलिए TVE बताइए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जल्दी से माइक ऑन करें, माइक ऑन, जल्दी माइक ऑन कीजिए जल्दी। Yes, sir. 24 electrons. 24। 24 इलेक्ट्रॉन्स। स्केलेटन में कौन सेंट्रल एटम कौन होगा? सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। Carbon. कार्बन या कार्बन, बाकी ऑक्सीजन इधर आ गए। चलिए, ये लाइन बनाया आपने, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 24, कितना माइनस करें इसमें से बताइए? 6. 6, रिमेनिंग 18. remaining 18. So 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, सही है? यस ये सर। तीन Yes, कंप्लीट sir. खत्म। यस ये सर। ऑक्सीजन हैप्पी? इज ऑक्सीजन Yes, हैप्पी? यस सर। Yes. दिस ऑक्सीजन हैप्पी? Yes, sir. यस Yes, sir. व्हाट अबाउट दिस वन? Yes, sir. सर। व्हाट अबाउट कार्बन? नो सर। No, No, sir. sir. Need 2 more. नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन No. चाहिए? 2 मोर इलेक्ट्रॉन। Two more. किसी एक ऑक्सीजन से मांग लेगा ये, ठीक यस है, सर। एक ऑक्सीजन से मांग लेगा। सो यू विल हैव ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन। ये इसके पास अब बचेंगे सिर्फ 2 लोन पेयर, इसके पास बचेंगे 3 पेयर, इसके पास बचेंगे 3 पेयर, सही है। अब इसके बाद, हाँ, ऊपर वाले में हम थोड़ा भूल गए थे, स्क्वायर Two ब्रैकेट में 2 नेगेटिव कर लीजिएगा, है ना, इसमें भी आ जाएगा इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट में 2 नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ गई ना क्या करना बात, है ना? यस सर। अब बॉन्डिंग, बॉन्डेड पेयर्स आपके पास, पेयर्स पूछ रहे हैं, तो बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 बॉन्ड है। लोन पेयर्स कितने हैं? लोन पेयर आपके पास है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर है ना। पेयर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Sir, अगर हम वो सर्कल वाला लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो where do we draw put the 2 minus? वो उसमें भी फिर आप ऐसे ये करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर ब्रैकेट 2 नेगेटिव, है ना, ये गोला गोला कर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करके, ठीक है। Yes, sir. अभी लेकिन ऐसे ही बना ली, बड़ा टाइम लगता है यार उसमें तो, और मतलब हाँ, हमको तो थोड़ा सा अगबक लगता है, अगर चीजें अच्छी नहीं दिखती है ना तो हमको थोड़ा सा
क्या ही है भाई, ठीक है। चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। नो उसके सर। बाद लिखिए एक, अच्छा जल्दी लिखिए तब। यस सर। अगला कंसेप्ट है आपको फॉर्मल चार्ज, फॉर्मेलिटी वाला चार्ज है, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज होता कुछ नहीं है, बस है फॉर्मल, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, फॉर्मल चार्ज एफसी है ना, एफसी इज डिटरमाइंड फॉर एन एटम, एटम की बात होती है यहाँ पे, ठीक, एंड नॉट फॉर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज नहीं होता है, किसका होता है फॉर्मल चार्ज? एटम्स। फॉर्मल चार्ज किसका होता है? एटम का होता है, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज होता है एटम। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज का, प्लीज देखिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, एटम या मॉलिक्यूल? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, एटम या एटम का, है ना, Atom. मॉलिक्यूल का नहीं। माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, दो है तो दो, ठीक है। बात समझ में आ रही सबको, है ना। लोन Yes पेयर sir. यस इलेक्ट्रॉन्स सर। किसका, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसका, Atom. एटम, एटम। ठीक है। माइनस द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने बॉन्ड्स हैं उनको आप माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर हमने बॉन्ड्स लिखा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखे, तो बॉन्ड काउंट करेंगे आप, क्या वो काउंट करेंगे, बॉन्ड। एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज वी हैव NO2 negative. We just made a structure of NO2 negative. It is something like this: oxygen with double bond, nitrogen with single bond oxygen. This is having two lone pairs. This is having three lone pairs. अब यहाँ पे हम ABC कर देते हैं इसको, ठीक है। This is atom A, this is atom B, this is atom C, because I have to calculate for the atoms. अगर आप लोग अभी लिख रहे हैं तो हम आपको टाइम दे देते हैं 30 सेकंड का। Whatever you have to write, please write it down. 30 सेकंड के बाद फिर आप लोग रुक जाइएगा, ठीक है। Your time starts now. बहुत लोगों ने लिख लिया होगा, फिर थोड़ा समझ लीजिए। टोटल वैलेंस सर इलेक्ट्रॉन, प्लीज लोन कैन पेयर यू इलेक्ट्रॉन्स, रिपीट बॉन्ड्स। अगेन? क्या रिपीट करेंगे? एलपी 30 का सेकंड फुल दे फॉर्म? रहे। LP लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ओके सर, थैंक ठीक है। ठीक है, तो आंसर देने के लिए थोड़ा तैयार भी हो जाइएगा। हाँ, ए का सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए टाइम आपका हो चुका है, 30 सेकंड हो गए। अब आ जाते हैं ए पे। So in A we have the oxygen atom. So first of all tell me, I will write the formal charge will be equal to, formal charge is equal to how much, tell me? We will write the total valence electron. अच्छा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ऑक्सीजन का ऐसी, यहाँ का Six. ऑक्सीजन नहीं, ऐसी ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ वेरी गुड, 6। Eight. ऑक्सीजन का होता है 6। हाँ अरे 6 सॉरी होता है रे भाई, 6 होता है। ऑक्सीजन सॉरी का कितना सर। होता है? ऑक्सीजन, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बताइए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में कितने हैं? हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डज दिस एटम हैव? A1 कितना लोन पेयर 4। इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, 2 नहीं बोलेगा कोई, 4 है, ठीक है। इल्हाम, अब्दुल हमीद, आकिब, 4 ना? कैन ऑल ऑफ यू सी दैट? Yes, sir. Yes sir. वेरी गुड। सो 4 माइनस, ये बॉन्ड कितने बना रहा है? हाउ मेनी बॉन्ड इज इट मेकिंग? 2। Oh, 4? किसने 4 बोला? 4 बोला So किसी ने? 2. 2 ना? yes, sir. इल्हाम, No, sir, I said 2 ना? no. अच्छा 2 बोल दिया। ओह माय बैड, माय बैड। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच नाउ, टेल मी? 4 6 minus 4 minus 2 कितना हो जाएगा? 0। जीरो। 0. 0। अच्छा चलिए बी के लिए स्टार्ट हो जाइए आप लोग। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, अच्छा ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था, बताइए। था ना? था ना इलेक्ट्रॉन? नहीं, नहीं था? था 80। हाँ, देखिए, यस सर, वो सर। था ना? लोन पेयर होगा वहाँ पे, अगर नहीं बनाया तो फिर नहीं, मेरी गलती। यहाँ पे हमने यहाँ से कॉपी करना भूल गए, यहाँ पे लिखा था, यहाँ नहीं लिखा ना, मेरी गलती है, माय बैड गाइस। और ये 2 नेगेटिव दे दिया हमने, यहाँ पे 1 नेगेटिव भी होगा, गलती कर रहे हैं हम। ठीक है, मिस्टेक होते रहता है मेरे से। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर नाइट्रोजन कितना होता है? 5. 5, वेरी गुड। आगे बताएं, 5 माइनस क्या आ जाएगा? 2। लोन पेयर कितना है इसमें?
लोन पेयर 2, वेरी गुड, हाँ सही है। Sir, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 3 बॉन्ड्स, कितना हो गया? 0 0। अब आ जाते हैं सी पे, फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6. 6 अब्दुल हमीद आपकी आवाज ही नहीं आती है। ओके, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 6. 6, 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कितने 1. इसमें ऑक्सीजन के पास? 1 1 कितना हो गया? -1. -1 -1। तो ये जो -1 चार्ज है ये इस ऑक्सीजन के पास है ना? यस Yes, sir. चलिए कॉपी कीजिए। So now can we write? हाँ हाँ लिखिए, कॉपी कीजिए तो बोला हमने। Thank you, sir. Done, sir. ओके, anyone still writing, please let me know. Finish, sir. चलिए आप एक का कर दीजिए जरा। आई एम गिविंग यू द स्ट्रक्चर, ओके। दिस इज NO3 नेगेटिव। हम लोगों ने NO, अच्छा CO3 2 नेगेटिव का कर लेते ना, CO3 2 नेगेटिव आप लोगों ने किया हुआ स्ट्रक्चर। चलिए स्ट्रक्चर होगा आपके पास CO3 2 नेगेटिव का। You have carbon doubly bonded with one oxygen. These oxygen are singly bonded. This has 1 2 electron, here 2 electron, here we have 1 2 3 4 5 6 electron, we have 1 2 3 4 5 6 electrons। ठीक है, लोन पेयर वगैरह इसमें तो है नहीं, यहाँ पे इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज ऐसे। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों इन तीनों का कर लीजिए सर, A B और C। ठीक है, बिकॉज जो C का होगा वही आपका इस वाले, ये D का भी वही सेम हो जाएगा, बिकॉज सारी चीजें सेम है C और D में, है ना। ABC करके हमको फोटो भेजिए। आई थिंक 5 मिनट्स विल बी इनफ, एटलीस्ट कुछ तो कर लीजिएगा 5 मिनट में आप लोग, है ना। Okay, sir. चलिए। आंखें बन रशिता नहीं have sent me. A is, yeah, fine, A is correct, B is correct, C, yeah, very good Rishita. Akib, A B C, yeah, very good Akib, correct। बाकी लोग प्लीज भेजिए जरा।
Ilham, can you please turn your mic on? Yes, sir. I can understand you have written for B. Okay, I'm talking about the B one. So it is, you have written 4 minus 0 minus 6. I don't understand minus 6. Why it is minus 6? Sorry, sir. It's supposed to be 4. ठीक कीजिए Yes. इसको. Yes, sir. बाकी फिर ठीक है आपका. अब्दुल हमीद नहीं हो रहा आपसे? हाँ अब्दुल हमीद. सर मैं कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो फिर आप? माइक ऑन कीजिए आप. ऐसे कैसे, मतलब ये तो आप मेहनत कर ही नहीं रहे फिर ना. हम आपसे सवाल पूछते तब आप फिर आंसर कर पाते हो. पेन चलाने की आपकी आदत नहीं है क्या? क्या हो गया अब्दुल हमीद? एक के लिए बताइए फॉर्मल चार्ज बताइए. 6 minus स्टार्ट. 4 into 6 माइनस 4 माइनस 2 2 कितना हो जाएगा? 0. 0. तो भेजना चाहिए ना, फिर भेजा क्यों नहीं आपने? बी के लिए बताइए. 4 minus 0 minus 4 भेजा क्यों नहीं आपने फिर? 0. सी के लिए बताइए जल्दी. सर आप हाँ 4 minus 0 minus 4 ये थर्ड वाला कर मास्टर रहा हूँ. बोलने ही नहीं रहे जी. सी वाला कर रहे हैं? हाँ 1 मिनट. करके भेजिए, करके भेजिए. उसके बाद ये समझिएगा आप लोग. क्या ख्याल है इल्हाम? छोड़ दे, जाने दे आपको? समझते हैं ये सवाल? So I struggled so much in this question in 10th that I didn't take maths in 11th. अरे यार इतना तो नहीं है. बहुत चलिए ठीक है, हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मैथ्स से ऐसे नहीं डरना. ठीक है, मैथ्स हाँ ये हो सकता है कि कोई आपको समझाने वाला उतना अच्छा ना मिला हो. बाय द वे यू नो इस बैच में नहीं है. देयर इज हर्षा इन C1 बैच. आपका C2 बैच है 11th का. हर्षा वो लर्नियो में, वो 10th में ही थी. 10th में लर्नियो में ही थी वो. उसके 100 आउट ऑफ 100 आए थे मैथ्स में. %, जिसको कहते हैं, है ना. बट और ये चीज आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि मैथ में आते हैं 100, और ये भी नहीं है कि मैथ किसी एक आदमी को आता बाकी लोग को नहीं आ सकता है ना. मैथ के लिए मैथ जीन्स ऐसे कुछ चीज नहीं होती है. मैथ किसी को आता है तो आता है, बस ये प्रैक्टिस की चीज है. आपने अगर ओवरऑल प्रैक्टिस किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो नहीं. ठीक है. अरे अब्दुल हमीद ये वाला आया, सी वाला? अच्छा बाय द वे इल्हाम, इसके कंसेप्ट में दिक्कत थी या कैलकुलेशन में दिक्कत थी? दोनों. ज्यादा दोनों में ही दिक्कत थी. अब्दुल हमीद सी का आया आपका? कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत थी. कंसेप्ट में ज्यादा. अच्छा कंसेप्ट, हाँ ठीक. कंसेप्ट तो फिर तुरंत क्लियर हो जाएगा. अब्दुल हमीद इसका बताइए. सर 6 4 6 माइनस minus 4 4 4 क्यों होगा? नहीं 6 minus 6 काउंट. sorry 6 6 माइनस 6 माइनस minus 6 minus 4 हाउ मेनी बॉन्ड्स अब्दुल हमीद? 3. अरे यार बॉन्ड कितने? बॉन्ड यार बॉन्ड बताओ ना. इस ऑक्सीजन के पास बॉन्ड कितने हैं? ऑक्सीजन है ना. ये 1 ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? हाँ 1. क्या के हुआ? बाद तो 1 नहीं बना सकता क्या? -1 हो जाएगा. सही है. हाँ. चलिए ये सवाल देखिए जरा. ये हम इस वजह से बता रहे हैं ना क्योंकि जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो एक तरह का यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो आपको बहुत जगह देखने को मिले. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, प्लीज सी, घबराने की बात नहीं. सबसे पहले लिखा हुआ है 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स. ऐसे लिख सकते हैं इन 9. अच्छा 9 3/8 को क्या लिख दें? 8 टाइम्स 72, 75/8 लिख दें. कोई दिक्कत? Yes, sir. 75 in 75/8 hours 2 taps fill a tank. fill 1 tank. एक ही जगह 1 टैंक लिख सकते हैं.
Yes, sir. है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बिल्कुल यूनिटरी मेथड पे जाते हैं हम, है ना। इन 1 hour 2 taps fill 1 divided by 75/8, इतना पार्ट फिल करेगा टैंक का। सही है, Sir, 8 ये by बात समझ में आई। 75. हाँ, फिर डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज क्या हो जाएगा, दैट मींस इट इज इक्वल टू 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक। ये सही समझ में आया कि नहीं आया, सबको ये बताइए। यस सर। यस सर। ये तो आगे समझ में, ठीक है। चलिए अब अगला क्या बोला हुआ उन्होंने, अगला बोला हुआ है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hour लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, टू फिल द टैंक सेपरेटली। अच्छा, यानी कि अगर हम बोलेंगे लेट द लार्ज टैप, let the large tap take x hours to fill, ठीक है। लार्ज टैप कितना लेता है, x hours, then To the fill one small tank. tap, हाँ, to fill one tap, to fill one tap, then small tap takes x plus 10 हो जाएगा। Yes, sir. इल्हाम कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। इल्हाम नहीं ना, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों को ऐसे कर सकते हैं, x hours, in x hours large tap fill one tank, सही है। तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से in 1 hour large tap fills 1 by x part of the tank, सही है। ये समझ में आया इल्हाम? अगर ये 5 घंटे में फिल करता, अगर मान लीजिए ये 4 घंटे में फिल कर दे रहा है एक टैंक को, तो 1 घंटे में कितना फिल कर रहा है, 1/4 पार्ट। समझ में आई ऑल ऑफ यू? यस। ये आया समझ में ना? उसी तरह से फिर हम क्या लिख सकते हैं, इन 1 hour small tap will fill 1 by x plus 10 part of the tank, सही है। यस सर। ठीक है, अब देखिए बस हो गया सवाल, तो सवाल हो गया। चलो ध्यान से, 1 घंटे में लार्ज वाला इतना फिल कर रहा है, 1 घंटे में स्मॉल वाला इतना फिल कर रहा है, तो दोनों मिलके कितना फिल करेंगे, दोनों मिलके फिल करेंगे 1/x 1 घंटे के अंदर, 1/x प्लस 1/x प्लस 10, सही है। 1 घंटे में स्मॉल Yes, लार्ज sir. वाला 1/x फिल कर रहा है और स्मॉल वाला 1/x/10 फिल कर रहा है, तो दोनों मिलके इतना फिल कर देंगे 1 घंटे में, सही है इल्हाम? बाकी लोग बताएं, ऋषिता वगैरह। यस सर। यस सर। और इसी चीज की वैल्यू क्या दी हुई है, ये तो दिया हुआ है 8/75, ये लिखा था ना पहले हमने, इन 1 hour 2 taps fill 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक। अब इसके आगे तो फिर कैलकुलेशन है, वो मतलब कंसेप्ट समझाना था। समझ में आया इल्हाम, नहीं आया? यस सर। थोड़ा ज्यादा आसानी से आ गया क्या, मैथ ले लेना था। हाँ ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीजें होती हैं। 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होती है इनवर्सली। जैसे आप आइसक्रीम लेने जाइए, तो जितना ज्यादा आप आइसक्रीम लीजिएगा उतना ज्यादा आपको क्या पड़ेगा, कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा। बट अगर आप काम की बात करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्रोजेक्ट, है ना, सो उस प्रोजेक्ट में आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट में आपको कुछ टाइम लगेगा करने को, है ना, तो काम को करने में जो टाइम लगता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पर्सन। टाइम और पर्सन के बीच में क्या रिलेशन है, कि पर्सन अगर बढ़ेंगे तो टाइम घटेगा। एक दीवार को पेंट करने में 2 आदमी को लगता है 2 दिन, तो आपके पास 4 आदमी होंगे तो 2 दिन में हो जाएगा, है ना। आपके पास और ज्यादा आदमी होंगे तो टाइम और कम लगता जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जितने ज्यादा, इसी वजह से सारी की चीजें इनवर्स में आ रही है, नीचे नीचे आ रही है। अगर आपका सिंपल रहता ना
कि आपने 2 आइसक्रीम लिया और 5 इतना लिया, तो ऊपर ऊपर रहती चीजें। इनवर्सली में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन इज लाइक दिस, टाइम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टैप्स। ठीक है, तो ये वाली चीजें नीचे आती। ठीक है, चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। थोड़ा मैथ से ऐसा घबराना नहीं है।